Today we will talk about convergence of fixed point iterations. I am starting with uh, root finding problem. So we consider a root finding problem fx equals to 0, and we write it as fixed point form x equal to g of x. So now I am going to discuss first existence of fixed point. So we have seen that by writing x equal to gx, you can solve the problem. So now I'm going to discuss briefly mathematically that in fact you will find a root by this problem. So existence means I am talking a fixed point exists. So what we talk here, a fixed point exists. So for this I start with, so what we do in fixed point, we write x equal to g of x and let r be a root of fx equals to 0. So what I am going to do, so this is my root, okay? So x equal to g of x means that you have a function in which input equals to output. यही मीनिंग है ना, x equal to g of x. So in other words, I will put condition on g. तो फर्स्ट कंडीशन है कि let g is continuous on interval ab. So let us take any interval ab which contains root, r. तो x इक्वल टू जी एक्स है, तो फर्स्ट जो हमारा कंडीशन है, आई एम राइटिंग दिस कंडीशन इन ब्रैकेट हियर. सो a fixed point exists if we, since we have x equal to gx. So this means जो gx है वो भी a और b में होना चाहिए. So if I take x here and you are saying that x approximately equals to g of x, तो क्या होना चाहिए, मतलब x अगर यहाँ से आप पिक कर रहे हो, यू आर पिकिंग x here somewhere near root, जैसे हमने कल एग्जांपल किया था. सो ये था अपना, आपने x2 लिया, gx was 3, then you fit 3, you got 9, then 87. तो आप दूर जा रहे हो ना, x इक्वल टू जी एक्स नहीं आ रहा. 2 फिट किया तो आंसर 3 आया, 2 के अराउंड नहीं है. 3 फिट किया तो 9, सो यू आर गोइंग अवे. बट इन थर्ड यू कैन सी यू स्टार्टेड विद 2, बट यू गॉट 1.75 नियर 2. फिर ये फिट किया 1.73 विच इज नियर, एंड आफ्टर सम टाइम यू गॉट इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट. ठीक है, तो अगर g कंटिन्यूस है, सो इन अदर वर्ड्स if I take x in AB, then let gx also belongs to AB. Actually what we do here, जब रूट मिलेगा आपको तो साइन चेंज होता है ना, जैसे हमने बाइसेक्शन में किया था, कुछ उस टाइप का ही करना है हमने यहाँ. बाइसेक्शन में अगर प्लस माइनस के बीच में जीरो आता है. सो लेट्स डिफाइन ए न्यू फंक्शन. एक phi x डिफाइन किया, यू कैन डिफाइन इट gx minus x, or you can define this x minus gx.
दोनों वे में डिफाइन कर सकते, दोनों का डिफरेंस लिया हमने। अब देखिए मैंने कहा कि जी एक्स इसके अंदर हो, एक्स तो इसके अंदर है ही इन दिस इंटरवल, so a is the minimum, b is the maximum. So what I am writing, if ga equals to a or gb equals to b, then a and b are fixed points, so nothing to prove. Okay, ए और बी फिक्स पॉइंट मिल गया आपको। जी ए अगर ए के इक्वल है, मिनिमम है ना, जी ए, जी की वैल्यू ए पे अगर ए के इक्वल है, ए इज फिक्स पॉइंट, एंड जी बी दिस वन मैक्सिमा, जी बी इक्वल्स टू बी, देन बी इज द फिक्स पॉइंट। Otherwise, since we know that gx also lies in a and b, then a और b में है तो ga a से बड़ा होगा, and gb will be less than b होगा। a मिनिमम है, अगर ga a के इक्वल है तो a फिक्स पॉइंट है, otherwise ga will be greater than a, as I am saying that all value of g lies in interval a to b, तो a से बड़ा होगा और gb क्या होगा, b से छोटा होगा। So then phi a from this equation, this one, then phi a, that is g of a minus a, this will be positive as ga greater than a, and phi b, which is gb minus b, so which is negative. Now you can see this function phi as we did in bisection method. Clearly you can say phi is continuous. Since g is continuous, x is continuous, so phi is continuous. Phi a is positive, phi b is negative. So you have situation something roughly, let's say a, this is b, this is a graph of phi. So phi changes its sign in a and b. So by intermediate value theorem, phi has at least one root. यही था, at least one root, or you can say phi has at least one fixed point. So now phi is continuous on interval AB, and phi A, phi B less than 0, then by intermediate value theorem, there exists a point, that root you can say that is R in AB, so that phi of R equals to 0. So what is phi? So this is GR minus R equals to 0. So GR equals to R. So R is a fixed point of G. So mathematically we have shown that there is a fixed point. कैसे शो किया? You compute, you write a new function gx minus x, and this function is changing its sign. अगर कब चेंज करेगा, कंडीशन है ये. So this is condition. If gx belongs to AB, then phi will change its sign. So you got a fixed point. So in other words, you are saying x equal to g of x. So it is clear from definition, if you take x, gx should be near that value. Okay, any doubt?
सो दिस इज मैथमेटिकली, बाकी हमने प्रैक्टिकली किया था. सेकेंड topic I am going to discuss uniqueness. So what we prove, what we want to prove, fixed point is unique. और यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी, that condition will be derivative of gx will be less than 1. In fact, maximum of derivative should be less than 1. I am not posing any condition here in the beginning. Just we will put condition as per the requirement. अब require unique show करना है. In mathematics, everywhere if you want to show uniqueness, so what do you do? On the contrary, we assume that there are two solutions. Okay, and then we will show that these two solutions are same. Okay, so let R1 and R2 are two fixed points. Of G. So what we show, R1 equals to R2. So for this I compute difference of these two, R1 minus R2 compute कर लो. By definition of fixed point, R1 equals to G of R1 and R2 equals to G of R2. Okay. Now there is a famous theorem using mean value property, or you can say using mean value theorem. Using mean value theorem. What this theorem says, you can write this difference fa minus fb equals to a minus b f dash c, and c belongs to a to b. I hope you have studied this theorem somewhere. This theorem says that function difference can be related with x difference. इधर fa minus fb है, इधर क्या है a minus b, और साथ में आता है f dash c, and c belongs to ab. C can be any point in interval ab. So apply this theorem on this difference gr1 minus gr2. So what you got? Modulus hai. So you will get g dash c. You can separate two modulus, r1 minus r2, where c lies between r1 and r2. I don't know which one is bigger, so I am just saying that this c will belongs to that. If r1 is smaller, then r1 to r2. If r2 is smaller, then r2 to r1. So you can write, okay? Now I am writing derivative. तो डेरिवेटिव का मैक्सिमा है x belongs to in that interval ab, g dash x. I am writing it, let's write it lambda. So what I am writing, maximum of g dash denoted by lambda. तो यहाँ फिट कर दो. Okay, should I continue? कुछ तो बोल दो. Okay, so fit, तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख रहा हूं मैं. लेफ्ट हैंड साइड क्या था, r1 माइनस r2. इधर डेरिवेटिव का मैक्सिमा फिट किया लैम्डा, सो दिस साइड विल बी बिगर. सो लेफ्ट में ले आइए, इधर 1 है, सो 1 माइनस लैम्डा, एंड दिस इज r1, नो नीड टू, r1 माइनस r2 less than or equals to 0. So what I want to prove, I want to prove r1 equal to r2. अब वो कब होगा, r1 r2 इक्वल कब होगा, जब दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0, जब 0 इक्वल आ जाए तो r1 r2 इक्वल हो जाएगा. यानी कि जो नेगेटिव वाला है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है आपने.
तो वो कब होगा? अगर आप ये कंडीशन डाल दो, इफ लैम्डा लेस देन 1, व्हाट इज लैम्डा? मैक्सिमम ऑफ डेरिवेटिव. If this is less than 1, so 1 minus lambda will be positive. This is modulus, this is always positive. So positive product cannot be negative. This means less than 0 will be discarded. तो क्या possibility बचेगी? Equals to 0. अब equal 0 होगा तो R1 और R2 इक्वल हो जाएंगे. समझ रहे हो? So I am putting condition as per requirement. So to unique fixed point, derivative must be strictly less than 1. So if lambda less than 1, then R1 minus R2 this is equals to 0. नेगेटिव नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है. अब लैम्डा लेस देन 1 है, 1 माइनस लैम्डा दैट कैन नॉट बी 0. दिस इज पॉजिटिव. इससे आप डिवाइड कर सकते हो तो ले जाके 0 से यू कैन डिस्कार्ड इट. तो R1 माइनस R2 0 है, रियल नंबर है, सो R1 इक्वल्स टू R2. So this implies, this shows that fixed point is unique. Okay. So mathematically I have shown that this is unique. Don't worry, the next point is important, that is we usually want to discuss. I have discussed these 2 points to just show mathematically that there exists a fixed point and it is unique. And third main point that we want to discuss, that is convergence, or in which we will compute error. Okay, so what are fixed point iteration? Fixed point iterations are xn plus 1 equals to g of xn. So this is symbolic. You can, कोई कहीं ये लिखना चाहिए तो आप ये भी लिख सकते हो, xn equal to g of xn minus 1. Both are same thing. Here you start n 0 1 2 3 4, and here you start n equal to 1 2 3 4. Okay, so these are iterations. So to find error, we have shown that fixed point is unique. तो unique है तो R1 R2 equal है, say this is R. Denote that fixed point with R. So now we compute error. So what is error? True minus approximate. यही error होता है. So true value, which is R, approximate is xn plus 1. अब R fixed point है, so you can write R equals to GR. xn plus 1 is gxn. Again use mean value theorem, previous one, this one. Use this theorem. Okay, so apply on this. So what you got? G dash C आएगा, but यहाँ पे xn है, so there are many x0, x1, x2. So x0 के corresponding एक c0 लिखोगे आप, x1 के corresponding एक नंबर दूसरा लिखोगे. Let's say this is c1. So just write it cn. G dash cn, then r minus xn. So what we use? Using mean value theorem. And you can write where cn lies between r and xn. Okay, say this is, put a number first. वैसे यहाँ से आप कह सकते हो this is error at next step, this is error at previous step, so order of convergence is 1. But before writing convergence, firstly we see this error more closely. So now you can write
r माइनस एक्स एन प्लस वन, ऊपर लिखा ही है मैंने, और यहाँ इसको कंटिन्यू कर देते हैं इसको, जस्ट राइट g dash cn, okay, so you can write now r minus xn plus 1. Replace this derivative with the maximum, that is lambda, then r minus xn. Okay, so this is a recurrence relation. This is true for any n. So what is the relation? R is fixed on both sides. Xn plus 1 is reducing to xn, and 1 lambda is coming out. So now apply this same result on r minus xn. So what you got? If you apply on r minus xn, so 1 lambda will come out. So r minus xn minus 1. So this is lambda square. एक बार और लगा लो. So this will be lambda cube r minus xn minus 3 and so on. Apply it n times. n टाइम अप्लाई करोगे तो इधर रहेगा r माइनस एक्स एन प्लस वन लेस देन और इक्वल्स टू, बार बार अप्लाई करते जाओ. सो लैम्डा n प्लस वन r माइनस एक्स जीरो. और यू कैन राइट r माइनस एक्स एन लेस देन lambda n r minus x zero. Replace n plus 1 with n. So this is called error formula. Now take limit n tends to infinity. We get what you get? R minus xn, limit n tends to infinity, limit n tends to infinity, lambda n. R minus x0 is constant, this is a fixed. Now lambda is a number less than 1. So what will be this limit? कोई नंबर 1 से छोटा हो. लिमिट का मीनिंग, लैम्डा एन का मीनिंग क्या है? लैम्डा 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 मल्टीप्लाई करो. लेट्स टेक लैम्डा इक्वल्स टू हाफ 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 हाफ. So what will be limit? 1 by 2 power n, n tends to infinity. एक नंबर 1 से छोटा हो तो लिमिट क्या आएगा? 0 आ जाएगा ये. दिस इज 0. अब r माइनस एक्स एन मॉड है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता. दिस मीन्स लिमिटिंग केस में एक्स एन कन्वर्जेस टू r, और यू कैन से एक्स एन इज नियरली इक्वल्स टू r एज n टेंड्स टू infinity. Okay, so limiting case में xn and r. This means that sequence you generate x0, x1, x2, x3, that is converging to root. And also you can write order of convergence also from first, जो भी लिखा था मैंने, first, this one, that is r minus xn plus 1. This is, you can say, error at n plus 1 step equals to g dash cn, and here I have written r minus xn, and you can write it error at nth step. So what relation you have? Error at next step, here is a modulus g dash cn, or you can say डेरिवेटिव को हमने मैक्सिमम लैम्डा फिट किया ना, ये भी लिख सकते हो g dash cn. सो मैक्सिमम डेरिवेटिव को लैम्डा लिखा है. सो एरर एट n plus 1 स्टेप लेस देन लैम्डा टाइम्स एरर एट प्रीवियस स्टेप. सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस?
error at next step, अगर lambda नहीं लिखना, you can also write it in this way. You can write in original way. Now take limit n goes to infinity. Error at n plus 1 step equals to, this will be g dash r or just write, or you can say in limiting case, en plus 1 equals to en. अब देखो cn मैंने कहा है कि cn का लिमिट r होगा. क्यों होगा? ये रूट आपका फिक्स है रूट. मान लो ये xn है आपका. सो xn क्या जा रहा है? r को जा रहा है, कन्वर्ज कर रहा है. और बाय डेफिनेशन क्या है? cn लाइज बिटवीन xn एंड r. आपने एक सैंडविच थ्योरम पढ़ा होगा सीक्वेंस में. अगर बड़े वाला इसको कन्वर्ज करेगा तो जो इन बिटवीन है दैट इज आल्सो कन्वर्ज टू सेम लिमिट. तो लिमिटिंग केस में जो cn होगा दैट विल बी r. सो एरर एट n plus 1 step equals to, this is g dash r constant, error at previous step power 1. So you can say order of convergence is linear or 1. Convergence is 1 as derivative जो है that is less than 1. Okay. So you have proved mathematically that fixed point iteration converges to root and order of convergence is 1. Any doubt in this? देखो थर्ड पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है. सो बट हमने क्या किया? यू कंप्यूट एरर कैसे निकालते हो? ट्रू माइनस अप्रोक्सीमेट, जस्ट कंप्यूट द डिफरेंस. ट्रू माइनस अप्रोक्सीमेट. अब जी में चेंज कर दो क्योंकि एक्स एन प्लस 1 जी है, ये भी जी होना चाहिए. आर इक्वल टू जी आर. अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम. सी एन लाइज बिटवीन आर एंड एक्स एन. So yeah, from this definition you can say order of convergence is 1 and Cn converging to R. और next step में मैंने क्या बताया? इस error को R minus xn plus 1 is less than lambda times this. फिर इस पे लगाओ आप इस पे. So what you got? Lambda R xn minus 1 हो जाएगा. फिर दोबारा पे n minus 1 पे लगाओ तो n minus, sorry या 2 आएगा. n minus 2. This will be n minus 2. ठीक है. 3 है तो 2 आया. n टाइम्स लगाओगे तो x n माइनस n आएगा. सो लैम्डा पावर n प्लस 1 ये आ जाएगा. सो टेक वन इंडेक्स डाउन. सो r माइनस xn दैट इज लेस देन लैम्डा पावर n r माइनस x0. x0 क्यों लेके गए? क्योंकि x0 फिक्स है. यू नो x0 दैट इज इनिशियल गैस. सो दिस इज अ कांस्टेंट and you can check that lambda n will goes to 0 since lambda is less than 1. So you can write since lambda less than 1, so lambda n goes to 0 as n goes to infinity. So in limiting case r and xn both are same and convergence is linear. फोर्थ पॉइंट और है, वी वांट टू, यहाँ पे भी एक चीज और है कि अगर ये डेरिवेटिव 0 हो जाए तो क्या होगा? ये तो लेस देन 1 तो था ना. मॉड लेस देन 1 है. हमने ये कहा ना डेरिवेटिव इज less than 1. So this means derivative is minus 1 to plus 1. So what will happen if this derivative is 0? That is next possibility. So what will happen if
g dash, you can say g dash r equals to Sorry, sir. Can you please show the previous page for a bit? Thank you, sir. what will happen if g dash r is 0? So that is a nice thing. वैसे भी यहाँ पे लग रहा है कि आपको एरर क्या होगा कि ये कोफिशिएंट 0 बन जाएगा, सो en plus 1 0, बट प्रिसाइसली 0 नहीं होगा. We have to see this situation more carefully by using Taylor series. I hope everyone know Taylor series. Taylor series नाम सुना है? So what will happen if derivative is 0? And this is the more, you can say this is more general result. I'm saying that what will happen if g dash, g double dash, second derivative 0 हो, and so on. एक नंबर है p, उससे पहले सारे डेरिवेटिव 0 हों, and pth derivative that is non-zero. So p can be 2, p can be 1. If p equals to 1, first derivative non-zero, first order convergence. If p equals to, अगला केस क्या स्टडी कर रहे हैं, what will happen if first derivative is 0, second is non-zero, and what will happen if first derivative 0, second 0, third 0, fourth 0, and so on. So एक नंबर p है, उससे पहले वाले डेरिवेटिव 0 हो और pth डेरिवेटिव नॉन 0 हो, तो क्या होगा? दिस इज जनरल रिजल्ट. सो आई एम राइटिंग टेलर सीरीज using Taylor's series. We have, so firstly I am writing fixed point iterations. xn plus 1 क्या है? G of xn. So what I am doing, add and subtract r. So now I am writing Taylor series. You can write Taylor expansion. So you can write fx equals to f of a plus x minus a, f dash a plus x minus a square by 2 factorial, f double dash a, and so on. Similarly, x minus a p minus 1 divided by p minus 1 factorial, f derivative p minus 1 at a, and this is remainder term at c. This is known as Taylor series. You can write, आपने वो पढ़ा होगा एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच, वो सेम चीज ही है, एच की जगह एक्स माइनस ए है. दिस इज टेलर सीरीज विद रिमाइंडर. सो स्केयर है तो 2 by 2 फैक्टोरियल सेकंड डेरिवेटिव, p minus 1 है तो p minus 1 फैक्टोरियल, f का p minus 1 डेरिवेटिव एट a, एंड लास्ट रिमाइंडर टर्म pth डेरिवेटिव फैक्टोरियल p, सिमिलर टर्म f p डेरिवेटिव, बट रिप्लेस a with c, and this c lies between x and a. So what is c? This is a point lies between x, x and a. So we write this expansion. So I'm not writing. We write Taylor series after that. So you can write fixed point iterations are fixed point iterations are given by this. So using Taylor series, xn plus 1. So you can think that this difference xn minus r, this is small, so this is h. So we are writing Taylor series g r plus h, or you can say this version. So both are same. So I'm writing this is g of a, means g r, then first derivative multiply by xn minus r, okay, g dash a, sorry, g dash not a, g dash r. Replace a with r, x with xn, then xn minus r square divided by 2 factorial, g second derivative,
and so on. Then x minus a, sorry, xn minus r, p minus 1, factorial p minus 1, g derivative p minus 1 at r, and last remainder term xn minus r power p divided by factorial p, g pth derivative at cn, where cn lies between x and n r. So now use condition, all derivative are 0. So this term accept first, second term will vanish, third will vanish, up to p minus 1, derivative are 0. So all term will vanish. So what you got in right hand side? Only first and last term. Okay, so I'm writing on new page. So xn plus 1 equals to first term and last term, which is xn minus r, p by factorial p, g pth derivative at, this is not power, this is a derivative. Okay, I hope you are comfortable with notation. अब इसको जी आर को लेफ्ट में ले जाओ, एक्स एन प्लस 1, जी आर को आप आर भी लिख सकते हो, इक्वल टू राइट हैंड साइड डिवाइड बाय p factorial g pth derivative at cn, and from this relation you can say or take limits. In limiting case, limiting case means limit n tends to infinity. In limiting case, you have left hand side error at n plus 1 step equals to xn minus r, error at nth step, and gp cn will converge to r divided by factorial p. So this number is a constant. Error at next step equals to error at previous step power p. So what is the order of convergence? By definition, पढ़ा था हमने, the order of convergence is p, जितना पावर हो इसका. So you can say that if first derivative is 0, second derivative is non-zero, second derivative non-zero मतलब p is 2, so order of convergence is 2. And if first derivative is 0, second is 0, third derivative is non-zero, you can say order of convergence of fixed point is 3. Or in other words, the order of convergence of fixed point is not fixed. You can say this can vary. This can be 1, 2, 3, etc. depending on the situation. और check कैसे करोगे? If you know the root, okay, compute its derivative. अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नॉन जीरो है रूट पे तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 1, अगर सेकंड डेरिवेटिव नॉन जीरो है तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2, अगर थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो है तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 3. ओके, फॉर एग्जांपल कंसीडर इटरेशंस xn plus 1 equals to xn ओके, सो बाद में करें, न्यूटन है इसलिए, और you can xn plus cos xn. So let us say you have this iteration converging to root pi by 2. What is the order of convergence? यहां से g क्या लिखोगे? xn plus 1 equal to something, जो something है that is gx. So what is gx? x plus cos x. रूट आपको दे रखा है, आप पाई बाई 2.
So compute its first derivative, that will be 1 minus sin x. तो रूट पे निकाल लो फर्स्ट डेरिवेटिव पाई बाई 2 पे. So 1 minus sin pi by 2, 1 minus 1, first derivative is 0. अच्छी बात है. Go further. Okay. Compute second derivative. वो क्या आएगा? 1 minus sin x minus cos x. Compute it at pi by 2. तो cos pi by 2 कितना आता है? 0. सेकेंड डेरिवेटिव भी 0. अच्छी बात है. Then compute third derivative. Cos का minus sin, minus minus plus. So compute third derivative at pi by 2, which is 1. This is non-zero. So what conclusion you make? Tell me. First derivative root पे 0 है, second 0 है, third non-zero. So what prediction you can make? What is order of convergence? Third derivative non-zero. So order of convergence is 3. Convergence is 3. Okay. So today we have discussed theoretical aspect of fixed point iteration, its existence, x equal to gx. So gx should be near root. And secondly, we discuss uniqueness, that fixed point is unique. Then we talk about its convergence. ठीक है, एरर निकाला था, एरर से हमने कन्वर्जेंस डिस्कस किया था. एंड मिनिमम ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज 1, and it can be 2, 3, etc. depending on the derivative of g. So if pth derivative of g is non-zero and previous all derivative are 0 at root, then order of convergence is p. And we have applied on this example xn, and जो xn वाला है वो g है. ठीक है, so g is x plus cos x. And I hope you understand xn plus 1. What is xn plus 1? This is अगर आप x इक्वल टू जी एक्स में लिखोगे, ये इंडेक्स है, ये उसमें ये प्रॉब्लम बनेगा. सो cos x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई बाई 2 फर्स्ट रूट जो है. ओके, सो ये डिस्क्रीट सेंस में है xn, और इफ यू राइट x, दिस इज इन कंटिन्यूस सेंस. ओके, सो xn मींस this is for particular value x0, x1, etc. And this is g of x, this is for every x. Continuous and discrete. So I'll stop now. Any query? Okay. So third derivative is non-zero. First and second, they are 0. Then order of convergence is 3. If information is not given about first and second derivative, then you say that minimum order of convergence of fixed point iteration is 1. And that is minimum. It can depend on situation. It can be 1, 2, 3, etc. Okay, so tomorrow we will study few more examples of fixed point, and then we move to